Hello and welcome to Famhealth. This year, World Heart Day's mission is to use the power of digital health to improve awareness, prevention, and management of CVD globally and to continue using heart to beat CVD. Use heart to connect. It's about using your knowledge, compassion, and influence to make sure your loved ones and the communities you're part of have the best chance to live heart healthy lives. Today on the show, we talk about how to manage this and make people more aware, especially in the light of the recent pandemic. We have with us to talk about this today super specialist Dr. Shirish Hiremath, who's the director, Cath Lab, Ruby Hall, Pune, India. He's been the president of the CSI in 2017. He's the program chair, CSI Conference 2016. Among many other accomplishments, Dr. Hiremath started by laying down a strong foundation of cardiology in Joshi Hospital, Erenvane. Ruby Hall is where he commenced his cath lab work and is the director of the cath lab here for many years now. Welcome to Famhealth, Dr. Hiremath. So here again, we are standing here again after a year, Dr. Hiremath, to talk about World Heart Day. And however, much has changed since last year. The pandemic took place, the second wave took place, and it has given a jolt to us in many respects. And I think related to the heart, it has especially made people more aware and more conscious. In the light of that, Dr. Hiremath, I would like for you to first give your message today on World Heart Day to all the people who are watching. I think heart disease is a part and parcel of Indian culture. The Indians get it young, which is a bigger worry compared to a Westerner. And the important issue is if we are careful, you can prevent getting heart problems or at least delay the first episode. Even if you delay the episode from 50 to 75, I think we have achieved a lot. So this is what I feel on this World Heart Day. डॉक्टर हिरामत, हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं और अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके आसपास इमीडिएट लोगों को क्या क्या करना चाहिए टू मैनेज इट? Heart attack, as everybody knows, happens because of clot formation. So there are vessels which take blood to the pumping chambers of the heart, and slowly over a length of time, the cholesterol deposition happens and keeps growing and narrows the vessel, which takes blood to the heart. Now, this narrowing, patient may realize that when he walks or walks fast, he gets fullness in the chest, which forces him to stop, take a pause, and then again he's able to continue. So after a decent effort, if somebody is getting fullness in the chest, which was not there, and it forces him to stop, I think we should get heart as a possibility. So when there is a narrowing, this is how patient presents. However, suddenly somebody may get chest pain. This is because on the dome of cholesterol narrowing, a crack develops. On that crack, the cells go and stick. And that's how narrowing, which is 90%, quickly becomes 100%. This can happen in a few seconds. And that's why somebody is sitting watching a movie, suddenly starts shouting with chest pain. And then we say, oh, he's got a heart attack. So it's a combination of cholesterol plus clots of the cell, which happens. And the clot happens quickly within few seconds. And that's why somebody who is healthy, looking good, suddenly gets into a heart attack. अगर पैंडेमिक की भी बात करें, हम हार्ट अटैक को ही लेके थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए. This particular pandemic, COVID, the virus has a specific link to clot formation. And जो लोगों को blockage नहीं है, उनको भी clot आ सकती है. And that's why suddenly the number of cases having clots in the heart, lungs, suddenly increased, and we were treating all these patients with clot dissolving medicine. So important is to diagnose first quickly, give some immediate therapy, which is generally intravenous. So injection के साथ वो दी जाएगी, और उसके बाद similar purpose is served by tablets.
So you switch from injection to tablet, which are taken at home for a length of few weeks, and that is how the clots can be completely dissolved and new clots can be prevented from forming again. डॉक्टर हिरामत, यहाँ पे फैमिली का क्या रोल हो सकता है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है पेशेंट को, जितने टाइम तक आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कैन दे डू समथिंग? उनसे अगर कुछ हो पाता है, व्हाट शुड दे बी डूइंग? Actually, whenever somebody gets a heart attack, its time is very crucial. The initial hour is called as a golden hour because if you treat that patient effectively in the first 1 hour, you save heart from getting damaged permanently. Otherwise, clot formation on top of cholesterol and total block, if it remains for a few hours, say 8 hours, patient sleeps overnight and comes next morning. Those 8 hours, the heart can get heavily damaged. So, जिम्मेदारी इसमें है कि हम हार्ट अटैक को पहले पहचान लें. Important to remember that the clot dissolving medicine given in first 4 hours have very effective penetration. They will dissolve the clot, and some flow is established, and that's how heart damage is saved. एक बार हार्ट को परमानेंट डैमेज हो गया, मसल जो जोर से कॉन्ट्रैक्शन देता है वो डैमेज परमानेंट हो गया, तो फिर बाद में उसको नॉर्मल करना बहुत मुश्किल रहता है. इसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी होनी मांगती है और इफेक्टिव होनी मांगती है. Okay, so quick intervention is the key for a heart attack. अगर अब इसके बाद हम चले, ड्यूरिंग कोविड काफ़ी सारी इंटरवेंशंस वगैरह रोक दी गई थी क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया था. इन द लाइट ऑफ दिस, डॉक्टर हिरमत, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे जो प्रोसीजर्स हैं, पहले तो हमें बताइए कि ये क्या होते हैं, किस लिए किए जाते हैं और इनका कोविड से रिलेटेड क्या परिणाम हुआ? एक्चुअली जो लोगों को हार्ट के सिम्टम्स है, हार्ट के टिपिकल सिम्टम्स इज, आप जब चलते हैं तो छाती में हेवीनेस आता है, सेंटर में ऐसा हेवी लगता है, कुछ तो पत्थर रखा है. पेशेंट का ये डिस्क्रिप्शन मैं देता हूँ कि ऐसा चलने के बाद लोग बोलते हैं किसी ने छाती पे पत्थर रखा है, ऐसा लगता है, उसको निकाल दे, बाजू को रखे, फिर हम चल सकते हैं, नहीं तो चल ही नहीं सकते, रुकना पड़ता है. ये पेशेंट की जुबान है. और कभी कभी ये चेस्ट पेन जो बीच में होती है सेंटर में, वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाती है और लेफ्ट हैंड को रेडिएट करती है. ये दोनों अगर साथ में आ गया, चेस्ट पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड, आई थिंक पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू अ ब्लॉकेज इज ऑलमोस्ट सर्टेन. और इस स्टेज में जल्दी से जल्दी ईसीजी निकालना जरूरी है. That's why we have to save time. So, moment you suspect, you rush the patient to a place where an ECG is possible. If he shows something, I think we need a next clot dissolving treatment, which we discussed. Clot dissolving treatment में intravenous injection देते हैं जो strong रहते हैं, जिससे क्लॉट डिजॉल्व होती है और ब्लड सप्लाई कुछ हिस्से में एटलीस्ट चालू हो जाती है. जो जो हार्ट में बच जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स फ्यूचर, जिससे पेशेंट को बाद में चलने में से दम लगना, सीढ़ी चढ़ने को नहीं आता, एक जगह बैठ के रहना पड़ता है, ये सब वीक हार्ट की जो तकलीफें हैं वो निकल आएंगी नहीं हार्ट अटैक के बाद. तो इसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी और अच्छी होनी जरूरी है और वो शुरू में होनी चाहिए. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.